Good evening, students. Happy Gandhi Jayanti and happy dry day. Okay, so here we will discuss quantitative aptitude PYQ. Online students, am I audible? Okay, those who are joined on YouTube, am I audible? Just write yes in comment. Okay, so this handout, here we have included quantitative aptitude PYQ. This handout is available on our IAS SETU official Telegram channel. So first we will discuss time and work PYQ. Okay. Question number 1. In a garrison, there was food for 1000 soldier for 1 month. After 10 days, 1000 more soldiers joined the garrison. How long would the soldier be able to carry on with the remaining food? Okay. So point here is there is a food for 1000 soldier for 1 month. Okay. And I tell you one thing here, in this question, examiner assume that month is for 30 days. मतलब वो assume करके चला है, ठीक है? So that is, I think they have to clearly mention in that month there is a 30 days. So here we have food for 1000 soldier for 30 days. ठीक है? 1000 soldier के लिए 30 दिन तक का हमारे पास खाना है. After 10 days, 1000 more soldiers joined the group. How long would the soldier able to carry on with the remaining food? So what you can do, we can assume like one soldier consume 1 kg food in 1 day. Just we assume. So here we have 1000 soldiers. So daily they assume 1 kg. So 1000 kg per day consumption, and here we have a stock for 30 days. So we have total food available is 30,000 kg. Okay. Next step, step number 2. 1000 soldiers, they consume food for 10 days. Every soldier consume 1 kg. 10 days they consume 10,000 kg of the food. So out of 30,000, 10,000 has been consumed. So remaining we have 20,000. Now next is after 10 days, 1000 soldier, more soldier joined the group. So now here how many soldier we have? 1000 plus 1000, we have 2000 soldier. And daily they consume 1 kg, means they consume 2000 kg. And remaining food you have available is 20,000 kg. So 20,000 kg and daily consumption is 2000 kg. So it will be sufficient for how many more days? 10 days. Okay. मतलब एक soldier daily 1 kg food consume कर रहा है. 1000 soldier, they consume 1000 kg, and we have a stock for 30 days. So we have 30,000 kg stock with us. They consume for 10 days, 10,000 kg has been consumed. So remaining food in the stock is 20,000 kg. 10,000 more soldiers join. So total number of soldiers now 2,000. Stock 20,000, daily consumption 2000 kg. So फिर how many more days this food is sufficient? 10 more days. Okay, now next question number 2. Ram and Shyam work on a job together for 4 days. Complete 60% of it. Ram और श्याम मिलके 4 दिन काम करते हैं and they are able to complete 60% of the work.
Ram take leave, then Sham work for 8 more days to complete the job. It means Sham alone can complete the remaining work in 8 more days. How long would Ram take to complete the entire job alone? Matlab Ram alone, how many days alone? Okay. So how we will handle this question? See, I just give you one suggestion. Don't have ideas ki formulas. There is something called common sense, logic, basic idea. See here, you read question carefully. It is given Ram and Sham work together for 4 days, complete 60% of the work. So they completed 60% of the work. Tell me what is the remaining work? 40%. So remaining work here is 40%. And who is doing the remaining work? Sham alone. Because Ram taken the leave, Sham alone is doing the remaining work. And in how many days? 8 more days to complete the job. So it means Sham alone can do 40% work in 8 days. मतलब शाम अकेले बचा हुआ 40% वर्क 8 दिन में कर सकता है. शाम alone can do the remaining 40% work in 8 days. So what is the capacity of Sham? 5% per day. क्योंकि Sham alone is doing the remaining 40% work in 8 days. Fine. Now here what is asked? How long would Ram take to complete the entire job? See here, it is mentioned Ram and Sham together in 4 days they do 60% work. और Sham daily क्या कर रहा है? 5% काम कर रहा है. Sham is doing 5% work per day. Sham की capacity of Sham is 5% per day. So in 4 days, what part of the work done by Sham? 20%. भाई शाम ने इस काम में सिर्फ 20% काम किया होगा क्योंकि शाम इज स्लो एज कम्पेयर टू राम. I repeat, Ram and Sham together in 4 days they do 60% work. Then Ram left the job. So remaining 40% work Sham alone is doing in 8 days. So what is the capacity of Sham? 5% per day. So by using this, where in initial phase where Ram and Sham together work for 4 days, मतलब राम ने 4 दिन काम किया, श्याम ने 4 दिन काम किया. तो if Sham here working for 4 days, 5% per day, 20% work done by Sham. 60% में से 20% work done by Sham, so it means 40% work done by Ram. In how many days? 4 days. Ram can do 40% work in 4 days. So what is the capacity of Ram? 10% per day. Ram daily can do 10% work. Now my simple question to you, if daily Ram can do 10% work, if Ram alone has to do 100% work, how many days Ram alone will take? 10 days. This is your answer. Here Ram Sham together, I repeat, Ram and Sham together they work for 4 days and they are able to do 60% work. It means remaining 40% work is done by Sham. In question it is mentioned in 8 days. So the capacity of Sham is coming 5% per day. And here in the initial phase Ram work for 4 days, Sham work for 4 days. So if Sham work for 4 days and we know Sham can do 5% per day, in 4 days 20% work done by Sham. तो 60% में से 20% काम शाम ने किया था. So it means remaining 40% work done by in how many days? 4 days. So what is the capacity of Ram? 40% work in 4 days. So capacity of Ram is 10% per day. If Ram capacity is 10% per day, Ram alone will take how many days for 100% work? 10 days. Fine. These are not direct question. Don't think that whatever we have studied in class directly will help. कि LCM ले लो और काम चल जाएगा. Think about the question. These are miscellaneous question or like you have to think and you have to act according to question.
श्याम की एफिशिएंसी निकलते राम की एफिशिएंसी निकलेगी और राम अलोन वी कैन फाइंड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. W can do 25% work in 30 days. X can do 1/4 of the work in 10 days. Y can do 40% work in 40 days. Z can do 1/3 of the work in 13 days. Who can complete the work first? So here one by one. W can do 25% work in 30 days. So it means 100% means complete work multiply with 4 120 days. If W can do 25% work in 30 days, so 100% work करने में उसको 120 दिन लगेंगे. Next is X. X can do 1/4 work in 10 days. Complete work means one work. So you take 4 other side, 10 into 4, 40 days. X take 40 days to complete the work L. Then Y can do 40% work in 40 days. So Y alone will complete 100% work. Use unitary method. 1% 40 upon 40, 100% 40 upon 40 into 100. So it is coming 100 days. So Y alone will take 100 days. Then Z alone can do 1/3 work in 13 days. So complete work means one work. How many days? You cross multiply 13 into 3 by 1, 39 days. 1/3 वर्क अगर 13 डेज में हो रहा है तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में होगा? 39 में. 1/3 of the cake you can eat in 13 days. Then next 1/3 also 13, 1/3 13. So it means complete cake you take 39 days. So now our question is, who will complete the work first? Z. Because here X is taking 40 days, W is taking 120 days, Y is taking 100 days, Z take 39 days. Okay. So your answer is D, Z. If percentage is given, you can find 100% work के लिए कितना टाइम लगेगा. If fraction is given, 100% means one work. One work के लिए कितना टाइम लगेगा? X take 40 days, Z take 39 days. Now next is question number 4. P work thrice as fast as Q. Whereas P and Q together can work 4 times as fast as R. P और Q मिलके R से 4 गुना फास्ट है. If P, Q, R together work on a job, in what ratio should they share the earning? Okay, and we know efficiency and wages is directly proportional. Efficiency and wages is directly proportional. If you are double efficient, you deserve double wages. ठीक है, अगर आप डबल एफिशिएंट है तो आपको दुगना वेजेस मिलेगा. तो वी हैव टू फाइंड देयर एफिशिएंसी रेशियो. हाउ वी कैन फाइंड P work thrice as fast as Q? तो we can assume if Q can make 1 unit, so it means P can make 3 unit. P work thrice as fast as Q. If Q is 1 efficient, P will be 3 efficient. Or if Q make 1 chair, P will make 3 chair. Next, where P and Q together can work 4 times as fast as R. It means P and Q together they can make 4 chair. It is 4 times as compared to R. If P and Q make 4 chair, R will be 1/4. If P and Q is 4 times, R will be 1/4. What is 1/4 of 4? 1. So R alone can make 1 chair. R की efficiency आ गई 1 chair की. Q make 1 chair, P can make 3 chair because P is thrice. P and Q together can make, together they are 4 times efficient as compared to R alone. So P and Q together 4, it means R will be 1/4. What is 1/4 of 4? 1. So R can make 1 chair. So now here, what is the efficiency ratio of P is to Q is to R?
3:1:1. P can make 3 chair, Q can make 1 chair, R can make 1 chair. If their efficiency ratio is 3:1:1, so here their wages ratio is also 3:1:1. So their earning is also share in the same ratio, 3:1:1. Because efficiency and wages are directly proportional. So in this question, our answer is A. Fine. Question number 5. A person X can complete 20% of the work in 8 days. Another person Y complete 25% of the same work in 6 days. If they work together, in how many days will 40% of the work will be done? Work be completed. Okay. So I tell you how to handle. Step number 1, X can complete 20% of the work in 8 days. So it means X will complete 100% work in how many days? Multiply with 5, multiply with 5, 40 days. X अकेले एक काम को 40 दिन में कर सकता है. Y can complete 25% the work in 6 days. So Y 100% work, how many days? Multiply with 4, multiply with 4, it is 24 days. If they work together, in how many days will 40% of work will be completed? Okay. See here, X alone can do one work in 40 days. Y alone can do that work in 24 days. या एक काम और कर सकते हैं, इससे इजी भी रहेगा. ठीक है. I tell you one more method which will be better than this. You can save your time. बट वहां फिर आपका आएगा डेसिमल वैल्यू. डेसिमल वैल्यू आएगी. चलो, I use this. I will tell you second method after this. X take 40 days, Y take 24 days. We take LCM. What is LCM of 40 and 24? 120. X can make 3 chair per day, Y can make 5 chair per day. Together they can make 8 chair. So 120 chair with the capacity of 8 chair, they can complete the work in 15 days together. मैं बता दूं मैंने क्या किया. पहले तो मैंने X के पूरे दिन निकाले. X पूरा काम 40 दिन में करेंगे, Y पूरा काम 24 दिन में करेंगे, दोनों मिलके पूरा काम 15 दिन में करेंगे. पूरा काम मतलब 100% वर्क. तो it means X and Y together complete 100% work in 15 days. They complete 1% work in 15 upon 100. They complete 40% of the work in how many days? 15 upon 100 into 40. ठीक है. So here 1 0 cancel. 5 3s are 15, 5 2s are 10, it is 2, 3 into 2 6 days. मतलब in 6 days together they complete 40% of the work. I repeat, X can do 20% work in 8 days. Step number 1, we find X can complete the work in how many days? Alone 40 days. Y can do 25% work in 6 days, so Y can complete the work in 24 days. Then we find X and Y together complete work by using our method LCM. We take total work 120 chair, X 3 chair per day, Y 5 chair per day, together 8 chair, 120 upon 8, 15 days. बट 15 दिन में वो पूरा काम करेंगे. मतलब 100% वर्क दे टेक 15 days. They ask 40% of the work. 1%, 40%. Okay. 15 upon 100 into 40, you simplify, you get answer 6 days. Method 2. Method 2 बता देता हूँ. थोड़ा डेसिमल होगा बट बेटर देन दिस मेथड. थोड़ा कम टाइम भी लगेगा बट इफ यू हैव टू बी गुड इन डेसिमल कैलकुलेशन. कैसे? X do 20% work in 8 days.
तो x in 8 days do 20% work. So in one day x can do 20 by 8, 2.5% work per day. 20 को 8 से डिवाइड कर दो, मतलब डेली x कितना परसेंट काम करेगा? 2.5%. अब फ्रैक्शन ले लो, डेसिमल नहीं लेना तो फ्रैक्शन ले लो, क्या आएगा? 5/2, 5/2 आ जाए. चलो, y in 4 days can do 25% work, in 1 day 25/4. It is the capacity of x in percentage, 5/2% per day, 25/4% per day. Together दोनों मिलके क्या करेंगे? 5/2 plus 25/4. You take 4, multiply with 4, you get 2, 10 plus 25. So 35/4% they are doing daily. Daily they are doing 35/4%. This is 1 day work. ठीक है? So now here 35/4% work they do in 1 day. Then 1% work they will do in 4/35. 40% work they will do in 4/35 into 40. बट यहाँ गड़बड़ क्यों हो रही है? It is 6 days. 25/6. My mistake. 25/6. We take 6. So here this is 15 plus 25, 40/6. अब तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी. तो in 1 day they do 40/6%. So now here my mistake, ये 6 था, मैंने गलती से 4 लिया था. So now here 40/6% work they do in 1 day. 1% work they will do in 6/40. So 40% work in how many days? 6/40 into 40. 40 cancels, 6 days. I tell you, I find x 1 day work, y 1 day work in term of percentage. Together 40/6%. अगर एक दिन में 40/6% करते हैं तो 40% 6 दिन में करेंगे. They will do 40% in 6 days. Fine. Next question. Question number 6. A man complete 7/8 of a work of a job in 21 days. 7/8 of a work they do in 21 days. How many more days will it take him to finish the job if quantum of work is further increased by 50%, 50%? They are not asking complete work, they are asking if quantum of the work increased by 50%. So how to handle question? A man doing 7/8 work in 21 days. It means complete work, cross multiplication, 21 into 8/7. So here 3 into 8, 24 days. And complete work is 100% work. या तो 1 बोलो या 100% बोलो, both are same. So it means that man can do 100% work in 24 days. If work is increased by 50%, so it means work will become 150%. Multiply with 1.5, multiply with 1.5, he need 36 days. But read question carefully. Question में पूछा है how many more days will it take him to finish the job if quantum of work is further increased by 50%. वो 21 दिन ऑलरेडी काम कर चुका है. He has already worked for 21 days. To complete 150% of the work, he need 36 days. So how many extra days he will work? 36 minus 21, 15 days. He need 15 more days to complete the work if the quantum of work is increased by 50%. I repeat, 7/8 work in 21 days. It means complete work in 24 days. अगर वर्क के साथ छेड़खानी ना की जाए तो 24 दिन लगते. But here we increase the quantum of the work by 50%. 100% work required 24 days. 150% of the work required 36 days.
how many more days he has to work. If he already worked for 21 days, now 150% the work required 36 days, तो he has to work for 15 more days. उसको 15 दिन और काम करना है. Next is question number 7. This is conceptual question. 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. In how many days can 12 men and 24 women do the same piece of work? Answer option given: 30 days, more than 30 days, less than 30 days, or more than 30 days. Data is inadequate to draw any conclusion. So here in question it is mentioned 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. Then it is asked 12 men and 24 women will take how many days? If you are really good with concept, answer is D. Data is inadequate. Why? Because the efficiency relationship of man and woman is not given. तो answer D है. But I will explain. कैसे? See here, we don't have fixed answer. Your answer keep on changing if you keep on changing the efficiency of man and woman. Like here, one case, you assume man is more efficient than woman. Man is more efficient than woman. Earlier in your organization, हाँ क्या है? इसके पास लॉजिक है. अब मेरे पास माँ है? तुम्हारे पास गांधी जी है. चलो पहले तुम्हारा लॉजिक टेस्ट होएगा, उसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं. 24 men and 12 women 30 days. Man is more efficient than woman. आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले 24 मैन और 12 वुमेन थी. आपने क्या किया? 12 मैन को 12 वुमेन से रिप्लेस कर दिया. तो अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में 12 मैन बचे. 12 मैन हटा के आपने 12 वुमेन को एम्प्लॉय कर लिया, तो 24 वुमेन भी है. So then tell me what will happen to your organization? Efficiency of your organization decrease or increase? अच्छा मैं बताता हूँ. आप क्या कर रहे हैं? ज्यादा एफिशिएंट लोगों को निकाल रहे हैं, कम एफिशिएंट को डाल रहे हैं. More efficient person are replaced by less efficient person. Overall efficiency of the system, ecosystem will decrease. If efficiency will decrease, it will take more time. तो then your answer will be more than 30 days. क्योंकि जो less efficient person है वो बढ़ रहे हैं, ज़्यादा efficient आप हटा रहे हैं. ठीक है, कई बार होता है like we get any political master over there or any boss in any of the company. ठीक है, तो वो क्या करता है, वो efficient लोगों को, मतलब their decision are not good, तो क्या करते हैं ज़्यादा efficient लोगों को, like there is like politics is going on in any organization, तो ज़्यादा एफिशिएंट बंदे हटते जाते हैं और चाटुकार अंदर आते रहते हैं. तो उससे क्या होता है? सो हियर एफिशिएंसी डिक्रीज, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज. तो यहाँ पे आएगा मोर देन 30 डेज. बट इफ इन केस वुमेन आर मोर एफिशिएंट देन मैन, if women are more efficient than men, earlier in the system there were 24 men 12 women. Now here you replace 10 men with 12 women, so you have 24 women. मतलब you replace less efficient person with more efficient. आपने क्या किया? सिस्टम को सुधारा. लेस एफिशिएंट हटाते गए, मोर एफिशिएंट डालते गए सिस्टम में. लेस एफिशिएंट पर्सन रिप्लेस बाय मोर एफिशिएंट, तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज. इफ एफिशिएंसी विल इंक्रीज, इट विल टेक लेस टाइम. Then your answer will be less than 30 days. But if in case man and woman are same efficient, if efficiency of man is equal to woman, so here
12 men 24 women, 12 men are replaced by 12 women and which are equally efficient, so your organization will be same, so it will take exact 30 days only. So you can't conclude whether it will be more than 30, less than 30 or exactly 30. We need man and woman efficiency relationship. अब हमें यही नहीं पता कि इस सिस्टम में मैन ज्यादा एफिशिएंट है कि वुमेन ज्यादा एफिशिएंट है या दोनों बराबर है. तो वी नीड एफिशिएंसी रिलेशनशिप टू कंक्लूड हाउ मेनी डेज दिस 12 मैन एंड 24 वुमेन विल टेक. तो आंसर इज डी, डेटा इनएडिक्वेट. ठीक है, इसका आंसर डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. A, B, C working independently can do a piece of work in 8, 16 and 12 days respectively. A alone work on Monday, B alone work on Tuesday, C alone work on Wednesday, A alone again work on Thursday and so on. Consider the following statement. There are two statements given. The work will be finished on Thursday, work will be finished in 10 days. Which of the above statement is correct? I already discussed that question in the class, but we will revise. See here, it is given A alone can do one work in 8 days, B can do in 16 days, C in 12 days. Now we take LCM. What is LCM of 8, 16 and 12? 48. So we assume total work is 48 unit or 48 chair. What is the capacity of A? A can make 48 chair in 8 days, means 6 chairs per day. B can make 48 chair in 16 days, means 3 chair per day. C 48 chair in 12 days, so 4 chair per day. Then it is not mentioned that they work together. They work on Monday, Tuesday, Wednesday. So we make a chart: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and so on. It is mentioned A work on Monday, B work on Tuesday, C on Wednesday, then A on Thursday and so on. B, C. When I discussed this question in the class, there was a confusion whether we have to take Sunday working or Sunday holiday. UPSC वालों को कोई छुट्टी नहीं होती है, including 2nd October. Until unless in question it is clearly mentioned Sunday is holiday, you have to take Sunday is a working day. क्वेश्चन में अगर नहीं मेंशन है तो संडे को वर्किंग डे मान के चलेंगे. A, B, C, A, B, C. Total work is 48 chair. First day A will make 6 chair. Next day B will make 3 chair. C will make 4 chair. So together in 3 days they make 13 chair. ऐसे 13, 13. 6, 3, 4. Again they make 13 chair. Then 6, 3, 4. Total 39 chair done. But work was 48 chair, remaining chair 9. After C, A will work, then B, 6, 3, 9. You can check exact 48 chair complete. This is the best. ठीक है, इससे बेस्ट है नहीं कुछ, मतलब लाइक हियर मैनुअली बेस्ट है इसमें. So here statement number 1, the work will be finished on Thursday. Yes, work will be finished on Thursday. Second statement, the work will be finished in 10 days. No, 3, 6, 9, 11 days. So here they are taking 11 days and work is finished on Thursday, correct. So only one statement is correct, A. Second statement is wrong क्योंकि उनको 11 दिन लग रहे. Next is question number 9. दो 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं टाइम एंड वर्क टॉपिक से. क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10. A certain number of men can complete a piece of work in 6K days. K एग्जामिनर ने लिखा, कुछ भी हो सकता है K.
where k is a natural number. By what percent should the number of men be increased so that the work will be completed in 5k days? If work is constant, work is same, number of men is inversely proportional to number of days. Yes. So here a certain number of men can complete a piece of work in 6k days. So these are the men, they can complete the work in 6k days. Okay. So here, if we want to complete that work in 5k, okay, we have to see how many men we need and what is the relationship. You can use PCC. PCC याद है? Length increase, breadth decrease. ठीक है? So number of days decrease by 1k. And what is 1k? ठीक है? So here 1k upon 6k, 1 upon 6 is 16.66%. You want to take 16.66% less days. आपने days को 1/6 से घटा दिया. If you are comfortable, I tell you two methods. One is this, second is time and work concept. Earlier you need 6k days, now you need 5k days. So number of days reduced by 1k out of 6k. Number of days are reduced by 1k out of 6k. So what is the reduction? 1/6, which is 16.66%. Okay, 16.66% decrease is compensated by 20% increase. 1/6 decrease compensated by 1/5 increase. Answer is 20%. If you are not able to recall this relation, then PCZ 100, 16.66% decrease. This become 83.33. This is type 1 of percentage. Here if your work same, area same, अगर 100 से start हो रहे तो 100 पे ही खत्म होना है. Tell me from 83.33 to 100, you have to increase or decrease? Increase. How much? 16.66. So 16.66 is what percentage of 83.33? It is 1/5. 1/5 is 20%. 16.66% decrease compensated by 20% increase. This is one relationship. If you are able to recall PCC, or if not, then I tell you. Like you can assume X men can complete a work in 6k days. I assume X men. Then I find 1k. If number of days are divided by 6, number of men will be multiplied by 6. अगर ये रूम हम 6 के दिन में बना सकते हैं and our boss order us कि that room they need in 1 day, तो अगर आपने days घटाए तो workforce बढ़ाना पड़ेगा. अगर वर्क 6 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मैन 6 से मल्टीप्लाई होएगा. तो इट मींस 6x मैन रिक्वायर्ड to complete this work in 1k. But here question is 5k. If you multiply it with 5, you have to divide it by 5. Tell me 6x divided by 5. What you get? 1.2x. दो बार लगाया मैंने रिलेशनशिप. Are you able to recall number of man is inversely proportional to number of days? If number of days are 6 times, number of man will be 1/6. मैंने पढ़ाया क्लास में टाइप 5. सेम वर्क मैन एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर डेज 6 से डिवाइड होंगे तो मैन 6 से मल्टीप्लाई होंगे. स्टेप नंबर 1. देन स्टेप नंबर 2. If 6x can do one work in 1k, but I want this work should be done in 5k. If number of days are multiply with 5, tell me man will be multiply with 5 or divide with 5? Divide. So we divided by 5, 6 by 5x. What is that? 1.2x. Earlier 1x, now 1.2x.
तो हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इज देयर इन नंबर ऑफ मैन? 20% इंक्रीज इज देयर. तो वी नीड 20% मोर मैन so that if we want to complete that work in 5k days. पहले जो वर्क 6k में हो रहा था, अब हमने उसको 5k डेज में कंप्लीट करना है, तो नंबर ऑफ मैन को 20% से बढ़ाना पड़ेगा. वी हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ मैन बाय 20%. टाइम एंड वर्क में यूनिटरी मेथड बिल्कुल सीधा लगता ही नहीं है, क्योंकि चैप्टर ही इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. पूरा ही चैप्टर उल्टा है. नंबर ऑफ मैन अगर डबल होंगे, डेज डबल नहीं होते, डेज हाफ होते. इफ नंबर ऑफ मैन डबल, डेज विल बी हाफ. Now here next is question number 10. This is 2024 question. XYZ can complete a piece of work individually in 6 hour, 8 hour, 8 hour respectively. X 6 घंटे में, Y 8 घंटे में, Z 8 घंटे में. However, one person at a time can work in each hour. Nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? मतलब इसने कुछ नहीं बोला कि x से स्टार्ट करना है, y से स्टार्ट करना है, z से स्टार्ट करना है, वो आपकी मर्जी है, उसी में दिमाग लगाना है, so that the work will be done in minimum time. Now we will do x, y, z. X can do one work in 6 hours, y can do in 8 hours, z can do in 8 hours. Take LCM. What is our LCM? 24 unit or chair. What is the capacity of X? X can make 24 chair in 6 days, so 4 chair per day. Y can make 24 chair in 8 days, so it is 3 chair per day. Z 24 chair in 8 days, so 3 chair per day. Per hour, sorry, per hour. Per hour. Per hour, 3 unit per hour. We read the condition carefully. कंडीशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. One person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. कोई भी 2 लगातार घंटे काम नहीं करेगा. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? If you want to get this work done in minimum time, only one person and nobody can work for 2 consecutive hours. Okay. So here X can make 4 chair, Y can make 3 chair, Z can make 3 chair. Whom you want to use for the maximum time? X. अगर आपको काम जल्दी कंप्लीट कराना है तो X is the best person you have available with you, क्योंकि वो 1 घंटे में 4 चेयर बना सकता है. एंड व्हाट इज योर वर्क? 24 चेयर. सो फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, 4, 5, 6, 7 एंड सो. सो यू स्टार्ट विद x. हमने x से काम करवा लिया 4 चेयर. बट द प्रॉब्लम इज यू कांट यूज x फॉर 2 consecutive hours. 2 घंटे लगातार नहीं यूज कर सकते. फिर y को यूज कर लो, y कैन मेक 3 चेयर. फिर x को यूज कर लो. वी वांट टू यूज x मैक्सिमम. x कैन मेक 4 चेयर. फिर y या z में से कोई यूज कर लो, z कर लो, y को रेस्ट दे दो. z कैन ऑल्सो मेक 3 चेयर. अगेन यू यूज x 4 चेयर. देन यू यूज y 3 चेयर. इट डजेंट मैटर, यू यूज y और z, डजेंट मैटर. सो दिस इज 7, 7, 7. 21 चेयर डन. उन्होंने ऐसा करते हुए 6 घंटे में 21 चेयर बना. अब चेयर क्या बची? 3. नाउ हियर आफ्टर वाई x कैन वर्क. Remaining chair 3. What is the capacity of x? 4. X will not waste full hour. Will take 3/4 of the hour. 3/4 the hour क्या होता है? 60 से मल्टीप्लाई करो, मिनट आ जाएगी. 15 into 3 45 मिनट.
x will take only 45 minutes to make 3 chair because in 1 hour x can make 4 chair. मतलब एक चेयर बनाने में उसको 15 मिनट लगती है, तो 3 चेयर के लिए 45 मिनट. सो योर आंसर इज 6 hours 45 minutes इज द मिनिमम टाइम. सो योर आंसर इज 6 hours 45 minutes. इससे कम में नहीं हो पाएगा बिकॉज द कंडीशन इज यू कांट यूज x फॉर 2 consecutive hours. ले लो जेड को, क्या होगा फिर? 3 चेयर है, 3 चेयर बनाएगा, 7 घंटे आंसर आएगा. क्या बेटर है, 6 घंटा 45 मिनट या 7 घंटे? एक्स को ही लेना बेटर है ना. यू ट्राई एनी अदर कॉम्बिनेशन, यू हैव टू यूज एक्स मैक्सिमम. यहाँ पे वाई की जगह जेड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. वाई कैन बी रिप्लेस बाय जेड बट एक्स कांट बी रिप्लेस बाय वाई, एक्स कांट बी रिप्लेस बाय जेड. एक्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है क्योंकि एक्स की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है. एनी डाउट? Now next is pipe and cistern. They ask only one question, that is in 2015. गलती से. Two pipe A and B can independently fill a tank completely in 20 minutes, 30 minutes respectively. A can fill a tank in 20 minutes. B can fill the same tank in 30 minutes. If both the pipe are opened simultaneously, how much time will they take to fill the tank completely? Simple. I think same question we have discussed in the class. What is the LCM of 20 and 30? 60. We assume capacity of tank 60 liter. A can fill 60 liter in 20 minutes, means 3 liter per minute. B can fill 60 liter in 30 minutes, means 2 liter per minute. Together 5. 60 by 5. Your answer is 12 minutes. Now next, train, time speed distance, boat and stream, race, circular motion. ठीक है, फिर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप. सर प्लीज रिपीट पीसीजी कैलकुलेशन. आज तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, फिर एक हफ्ते बाद कौन करेगा? Now here, earlier 6k days, now 5k days. First you have to find how much percentage decrease is there in days. Man and days are inversely proportional. This is our type 1 from percentage. I told you product of two thing. ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी काम करता है, बट हियर डिस्टेंस हैज टू बी सेम. टाइम एंड वर्क में जहां काम करेगा वर्क इज सेम. इफ नंबर ऑफ मैन डबल, डेज हाफ, वहां वाले कंसेप्ट में. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड हाउ मच परसेंटेज डिक्रीज इज देयर इन डेज. फ्रॉम 5k it become, from 6k it become 5k. तो देयर इज ए रिडक्शन ऑफ 1k आउट ऑफ 6k. 1k आउट ऑफ 6k इज 1/6. 1/6 होता है 16.66%. तो नंबर ऑफ डेज आर रिड्यूस्ड बाय 16.66%. One, if you are able to remember, 16.66% decrease compensated by 20% increase. Direct answer. बट आपके चेहरे से लग नहीं रहा कि आपको रिकॉल हो रहा है. फिर दूसरा तरीका था कि पीसीसी में मैंने बताया था we always start with 100. We put each effect 1 by 1. So the effect on the time is 16.66% decrease. 16.66% from 100 is 16.66. It becomes 83.33. When your salary same, petrol price same, area same, budget same, distance same, work same, you start with 100 and you end with 100. जिससे start करते हैं उस पे ही खत्म करते हैं. 83.33 से 100 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. कितना? 16.66 इंक्रीज करना पड़ेगा. किसके ऊपर? 83.33 के ऊपर. तो इसको सॉल्व करने से आएगा 1/5. 1/5 is 20%. 1/6 decrease compensated by 1/5 increase, और 16.66% decrease compensated by 20% increase. Now here next is train.
time, speed, distance, boat and stream, race, circular motion. Train. Three question, one asked in 2013, then 17, then 18. Question asked in 2011 का कहां से आ गया? चलो ट्रेन बाय मिस्टेक कुछ और खुल गया था. A train travel at a certain average speed of a train travel at a certain average speed for a distance of 63 km and then travel a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its original speed. If it take 3 hours to complete the total journey, what is the original speed of the train in kilometer per hour? Okay, and I can tell you out of these three questions, this is like थोड़ा सा difficult side है, but still we can manage. I give you two methods. One is answer option. I will use answer option. Second is taking conventional method. A train travel at a certain average speed for a distance 63 किलोमीटर. वो कहना क्या चाह रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं. एक ट्रेन 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है किसी स्पीड पे, मान लो x पे, और फिर उसके बाद 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 6 किलोमीटर मोर देन x, मतलब x प्लस 6 की स्पीड से. एंड ड्यूरिंग दिस टोटल जर्नी इट टेक 3 आवर. इसको टोटल टाइम 3 घंटे लगते हैं. फाइंड व्हाट इज x, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर. ठीक है, आंसर ऑप्शन दिया 24, 33, 42, 66. आई ट्राई टू यूज. I tell you how we can use answer option. 24, 33, 42, 66. 63 kilometer distance is covered. For example, I assume A is correct. मैंने मान लिया कि A सही आंसर है, तो 63 किलोमीटर I cover at a speed of 24. Then next 72 kilometer distance I will cover at a speed of 30. 24 plus 6, 30. तो 72 मैं कवर करूंगा 30 की स्पीड से. इफ द टोटल टाइम विल मैच विद योर क्वेश्चन 3 आर परफेक्ट. पिक्चर सही है, नहीं तो पिक्चर में गड़बड़ है. इट शुड मैच विद योर क्वेश्चन. तो 63 अपॉन 24 क्या आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग. 72 अपॉन 30 इज 2 पॉइंट समथिंग. कुछ भी आए 4 घंटे से ज्यादा आ रहा है. इट इज कमिंग मोर देन 4 आवर, बट इट इज नॉट पॉसिबल. According to question, total time has to be 3 hours. तो 24 is a wrong answer. Total time 3 घंटे बनने चाहिए. x की वैल्यू नहीं दी तो आंसर ऑप्शन की जगह यूज कर लो ना. x को 24 पुट कर लो और यहाँ पे 30 पुट कर लो. Then I try 33. I cover 63 kilometer at a speed of 33. I cover 72 kilometer at a speed of 39. ठीक है, अब ये 2 से कम आएगा, लेकिन प्रॉब्लम इज, ट्राई करते हैं. 63 अपॉन 33, 33 वन जा 33, 30. पुट ए डेसिमल, पुट 0 डेसिमल. 33 9 जा 297. तो इट इज कमिंग 1.9 समथिंग. देन 72 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 39. 72 डिवाइडेड बाय 39, 39 वन जा 39, क्या आएगा 333. पुट ए डेसिमल, पुट 10, पुट डेसिमल. 39 8 जा, इफ यू टेक 39 इंटू 8 क्या आएगा 300 कुछ आएगा, 312. तो 1.9 प्लस 1.8 टोटल टाइम इज मोर देन 3.7. है ना, पिक्चर खराब हो गई ना 3.7 पे, बिकॉज इट हैज टू बी एग्जैक्ट 3 आवर. अब थर्ड आंसर ऑप्शन बचा 42 आवर, 42 किलोमीटर पर आवर. सॉरी. सो नाउ हियर आई एज्यूम 42 इज ए करेक्ट आंसर. It means I cover 63 kilometer at a speed of 42.
then I have to cover 72 kilometer with a speed 6 more than 42. Tell me what is 6 more than 42? 42 में 6 ऐड करो, 48. 63 divided by 42 is exactly 1.5 hour. 72 divided by 48 is exactly 1.5 hour. You need 1.5 hour for this distance. You need 1.5 hour for this distance. You need total time 3 hour. Perfect, perfect, perfect. हर चीज fit होगी अपनी. If everything in the line, on the line, or like everything get fit, it means that is the correct. So here, what is the original speed of the train? 42 kilometer per hour, because it fit in your question. Conventional method will be more time consuming. I will try. X मान के भी करके देखेंगे, but better you use answer option, क्योंकि answer option जो सही होगा वही fit बैठेगा. Now, 63 kilometer I cover with the speed of x. Then 72 kilometer I cover with the speed of x plus 6. Here I need time t1. Here I need time t2. And I told you when the time is given, time से ही खेलना है. t1 plus t2 is 3 hour. What is time? Distance upon speed. So 63 upon x plus 72 upon x plus 6 is equal to 3 hour. प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे? क्वाड्रिक इक्वेशन की. x plus 6 मल्टीप्लाई विद x plus 6, x से x कैंसिल हो जाएगा. 63 x plus 6 मल्टीप्लाई विद x, 72x is equal to 3. 63x plus, what is 63 into 6? 378 plus 72x is equal to, ये क्या हो गया? x square plus 6x, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है. 3x square plus 18x. ठीक है, मैंने एक स्टेप खत्म कर दिया बीच में. x square, ये क्या हो गया? x square plus 6x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अब सब वैल्यू को उधर ले जाओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर को नेगेटिव नहीं बनाया जाता, कोई फायदा भी नहीं है ना बनाने का. 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस, क्या हो रहा है ये? 63 प्लस 72 क्या होगा? 115 माइनस 115x माइनस 378 इज इक्वल टू 0. नहीं, 135x. 3x स्क्वायर, व्हाट इज, माइनस हो जाएगा ना, माइनस में कितना आएगा? 117x माइनस 378. एवरी वैल्यू इज डिविजिबल बाय 3. 3 से डिवाइड कर दो. x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इज इक्वल टू 0. अब 39 को ऐसे ब्रेक करो, माइनस 39 रहे और प्रोडक्ट भी नेगेटिव आए, तो एक वैल्यू नेगेटिव रहेगी, एक पॉजिटिव, और 126 होगा. तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0. So your factors, take x common, x minus 42 plus 3 common, x minus 42 0. This is x minus 42, x plus 3 is equal to 0. x की दो वैल्यू आ जाएंगी, plus 42 and minus 3. Speed cannot be negative, so 42 is your answer. If you have not understood, don't problem, no problem, don't worry. अगर अब तक जीवन कट गया, आगे भी कट जाएगा. I told you when I have taken boat and stream, I have taken geometry mensuration, other topic, wherever you feel like there is a quadratic equation, better use answer option. इस क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन यूज करना अकॉर्डिंग टू मी इज बेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2.
train. A train left Delhi for Mumbai at an average speed of 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई की तरफ निकली 40 की स्पीड से। 2 hours later, an express train left Delhi for Mumbai following the freight train on a parallel track at an average speed of 60 km per hour. How far from Delhi would the express train meet the freight train? Similar question I have dictated. What concept will help you? चोर पुलिस वाला concept. But there is no initial distance. Initial distance बनानी पड़ेगी। कैसे? 2 घंटे में। See here, what is important? There is a slow train left Delhi to Mumbai at an average speed of 40. 40 की स्पीड पे एक ट्रेन चली। आफ्टर 2 hour, 2 hour later, 2 घंटे के बाद, तो ये ट्रेन तो 80 किलोमीटर आगे निकल जाएगी। So this is your slow train. In 2 hours, it cover 80 kilometer. So now it keep on moving at a speed of 40 kilometer per hour. Now you start your express train at a speed of 60 kilometer per hour on the parallel track in the same direction. So here, in how many hours this express train will catch the freight train or how far from Delhi? ठीक है, पहले टाइम निकाल देते हैं, फिर डिस्टेंस निकालेंगे। टाइम कैसे आएगा? रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, इनिशियल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। व्हाट इज द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ट्रेन? 80 किलोमीटर। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड? 60 minus 40. When there are two objects moving in the same direction, relative speed we subtract. So here 80 upon 20, it will take 4 hours. So express train will take 4 hours to catch the freight train. एक्सप्रेस ट्रेन को 4 घंटे लगेंगे फ्राइट ट्रेन को कैच करने में। नाउ हियर, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली? तो ये एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल रही है, तो 4 घंटे में, इन 4 hours, व्हाट डिस्टेंस दिस एक्सप्रेस ट्रेन विल कवर? सो हियर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन? 60 टाइम 4 hours, तो आफ्टर 240 किलोमीटर इट विल कैच द फ्राइट ट्रेन। 240 किलोमीटर पे उसको पकड़ ले। ओके, सो आवर आंसर इज 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A train 200 meter long is moving at a rate of 40 kilometer per hour. In how many seconds will it pass a man standing near the railway line? Standing near the railway line. 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देयर इज अ मैन स्टैंडिंग नियर टू रेलवे लाइन। स्टैंडिंग लिखा है, ओके, सीटिंग नहीं लिखा। तो उसको कितना टाइम लगेगा? प्रॉब्लम क्या है? स्पीड, यूनिट ऑफ द स्पीड गिवन इन किलोमीटर पर आवर एंड लेंथ गिवन इन मीटर। तो यू हैव टू कन्वर्ट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। इफ यू हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, हमारे पास कौन सा अस्तर है? 5/18, 5/18। तो हियर इट विल बी 200/18। डोंट सिंप्लीफाई, क्योंकि अभी काटोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, इसको 200/18 मीटर पर सेकेंड ही लो। व्हाट इज टाइम? Time is equal to distance upon speed. Length of the train is distance only, 200 meter, and real speed in meter per second is 200/18. इसको उल्टा कर दो, 200 into 18/200, so it is 18 second is your answer. 18 second. In how many second will it cross a man standing near the railway line? 18 second. इज दिस क्लियर? सबसे इजी क्वेश्चन ये तीनों में से। नेक्स्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस। सही चल रहा है, एक पेज खत्म हो गया, 2 पेज 2 घंटा हो गया। पहला क्वेश्चन वी ऑलरेडी डिस्कस। इफ ए ट्रेन ट्रेवल
If a bus travel 160 kilometer in 4 hours and a train travel 320 kilometer in 5 hours at uniform speed, then what is the ratio of the distance traveled by them in 1 hour? So this bus cover 160 kilometer in 4 hours and train cover 320 kilometer in 5 hours. So the distance covered by bus in 1 hour is 40 kilometer. Distance traveled by train in 1 hour is 64. So what is the ratio of the distance traveled by bus and train in 1 hour? 40 is to 64, divide by 8, you get 5 is to 8. So your answer is 5 is to 8. What is the ratio of the distance traveled by bus and train in 1 hour? Bus travel 40 kilometer, train travel 64 kilometer. You can simplify 5 is to 8. Now next is question number 2. Mr. Kumar drive to work at an average speed of 48 kilometer per hour. Time taken to cover the first 60% of the distance is 10 minutes more than the time taken to cover the remaining distance. How far is his office? Speed is given, time nikalna hai. I already taken this question in the class. 60% distance he take 10 minutes more than to cover the remaining distance. Tell me what is the remaining distance? 40%. We assume let Mr. Kumar take X minute to cover 40% distance. Then according to question, to cover 60% distance, how much time he take? 10 minutes more. Time taken to cover the first 60% of the distance is 10 minutes more than the time taken to cover the remaining distance. So here Mr. Kumar will take 10 minutes extra. Then I told you break 60% as 40% plus 20%. इसको break करो 40%, 40% and 20% में. 40% plus 20%. Because 40% distance required X minute. So it means this X minute are for 40% distance. तो ये 10 मिनट किसके लिए लग रही है? 20% डिस्टेंस के लिए. तो मिस्टर कुमार स्पीड इज सच दैट टू कवर 20% डिस्टेंस ही नीड 10 मिनट. वो 10 मिनट एक्स्ट्रा किसके लिए लग रही है? 20% डिस्टेंस के लिए. क्योंकि 40% डिस्टेंस के लिए तो लगनी x मिनट है. 40% डिस्टेंस रिक्वायर्ड x मिनट, तो दिस 20% डिस्टेंस रिक्वायर्ड 10 मिनट. वो 10 मिनट एक्स्ट्रा इसके लिए लगी है. तो 20% डिस्टेंस रिक्वायर्ड 10 मिनट, 1% distance required 10 by 20, 100% distance required 10 upon 20 into 100. So it give you 5 into 10, 50 minute. So Mr. Kumar need 50 minute to cover this distance. But speed is given in kilometer per hour. You have to convert 50 minute in hour. तो क्या करने का है? 50 upon 60, 5 by 6. What is the distance? Distance is speed into time. Speed 48 time 5 by 6 are 6 give you 8, 8 into 5 40 किलोमीटर. बस ये समझ लो, ये 10 मिनट 20% डिस्टेंस के लिए मांग रहा है. जैसे you can solve 10 question in x minute and you can solve 12 question in x plus 20 minute. तो 10 क्वेश्चन अगर x मिनट में हो रहे हैं तो यहाँ 12 क्वेश्चन you have solved, means you have solved 2 extra question. And how much extra time you have taken? 20 minutes. So it means your speed is to solve 2 question you need 20 minutes. तो 40% distance required x minute, तो 40 plus 20, 40% distance x minute, 20% distance 10 minute. वो 10 मिनट एक्स्ट्रा डिस्टेंस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. A person can walk a certain distance and drive back in 6 hours. He can also walk both way in 10 hours. How much time will he take to drive both way? I give you two methods which I have already discussed in the class. One method is here walk and drive back, he takes 6 hours. Walking both way, walking plus walking required 10 hours. So two side walking required 10 hours, take two other side,
one side walking required 5 hours. So in this walking plus driving 6 hour, you put value of walking 5 plus driving 6 hour, one side driving required 6 minus 5 1 hour. एक तरफ ड्राइविंग में 1 घंटा लगता है, तो बोथ साइड ड्राइविंग रिक्वायर्ड हाउ मेनी आवर, 1 + 1 2 आवर. ठीक है, इट इज लाइक सिंपल इक्वेशन मेथड, बट हियर वी कैन डू जुगाड़. कैसे? बोथ साइड वॉकिंग रिक्वायर्ड 10 आवर, one side walking and one side driving required 6 hours. So if you replace walking with driving, you have to do -4. Again, if you replace this walking with driving, again you have to do -4. तो two side driving required 2. एक रिप्लेसमेंट में 4 घटाना पड़ रहा है, तो दूसरे रिप्लेसमेंट में भी 4 घटाना पड़ेगा. इफ यू रिप्लेस वॉकिंग विद ड्राइविंग, यू कैन से 4 आवर, आपके 4 घंटे बच रहे हैं. तो दूसरी बार भी वॉकिंग को ड्राइविंग से रिप्लेस करोगे, फर्दर यू कैन सेव योर 4 आवर, तो यू नीड ओनली 2 आवर. तो बोथ साइड ड्राइविंग रिक्वायर्ड ओनली 2. क्वेश्चन नंबर 4, that also we have discussed. A thief running at 8 km per hour is chased by a policeman whose speed is 10 km per hour. If the thief is 100 meters ahead of the policeman, then the time required for the policeman to catch the thief will be. तो कितनी मिनट में ये पुलिसमैन थीफ को कैच कर लेगा? प्रॉब्लम हियर इज डिस्टेंस गिवन इन मीटर, स्पीड गिवन इन किलोमीटर पर आवर, तो वी कन्वर्ट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. See here, in this type of question, this is policeman, this is thief, and here at this point this policeman will catch the thief. So here we have a shortcut, time is equal to relative distance upon relative speed. Speed, relative speed is speed of the policeman minus speed of the thief. 10 km per hour minus 8 km per hour, so it is 2 km per hour. And we have to convert this in meter per second. 2 km per hour we have to convert in meter per second, multiply with 5/18, so it is 10/18 meter per second. Then here what is the relative distance, means initial distance. दोनों के बीच में distance कितनी थी? 100 मीटर की. And here relative speed is 10/18. तो 100 into 18/10, so 180 seconds. So this policeman will take 180 seconds to catch the thief. 180 seconds means how many minutes? 3 minutes. So here policeman will take 3 minutes to catch the thief. Next, question number 5. Two cars start towards each other from two places A and B, which are at a distance of 160 km. They start at the same time 8:10 a.m. If the speed of the car are 50 km per hour and 30 km per hour respectively, they will meet each other at. ठीक है? See here, distance between these two places is given 160 km, and there are two cars. One car will go in this direction, other car will go in this direction. Two cars starts towards each other at 8:10 a.m. Speed of this car is 50 km per hour. Speed of this car is 30 km per hour. If there are two moving objects approaching each other, means they are moving in opposite direction. Tell me relative speed. So what is this? Their relative speed 50 plus 30, 80 km per hour. So to cover 160 km with their relative speed 80, how many hours they need? 2 hours. So after 2 hours they will meet. कहीं भी बीच में वो मिलन करेंगे 2 घंटे बाद. So you add 2 hours here. What is your answer? 10 hours 10 minutes. 10:10 पे they will meet. Question number 6.
Similar question we have done. See, I told you distance upon slow speed minus distance upon fast speed is equal to time difference. A worker reaches his factory 3 minutes late if his speed from his house to factory is 5 km per hour. When he walk at a speed of 6 km per hour, then he reaches the factory 7 minutes early. The distance of the factory from his house is. So first day he is 3 minutes late. Next day he is 7 minutes early. Tell me what is the time difference. मैंने बताया था ना रूल, अगर आप स्कूल 3 मिनट लेट जा रहे हो, यू आर रीचिंग योर स्कूल एट 8 o'clock 3 minutes. Next day if you are 7 minutes early, you are reaching your school at 7:53. What is the time difference? 10 minutes. You have to convert this in hour because speed are given in kilometer per hour. So your time difference is 1/6 hour. The next is distance upon slow speed. Slow speed is 5 km per hour minus distance upon fast speed is equal to time difference, which is 1/6. This is direct shortcut. Now we take LCM. What is LCM of 5 and 6? 30. Multiply with 30, we get 6D. Multiply with 30, you get 5D is equal to 1/6. So D upon 30, 1/6. So D is equal to 30/6, 5 km. So what is the distance between his factory and home, house and factory? 5 km. Next is question number 7. Two cities A and B are 360 km apart. A car goes from A to B with a speed of 40 km per hour and return to A with a speed of 60 km per hour. What is the average speed of the car? For average speed, I told you when we go from one place to other place with a speed of x, come back with a speed of y, we have 2xy upon x plus y. So it will be 2 into 40 into 60 divided by 40 plus 60. क्या हो जाएगा ये? 4800 upon 100, 48 kilometer per. Next. Question number 8 is a mix of time, speed, distance and DI. And I cover the DI concept. DI concept is in a speed time or velocity time graph, area under the graph represent distance covered. जो हमने पढ़ा था ना कि like here this is train A, this is train B. So here if it is a speed time or velocity time graph, it represent the distance covered by train B, and here this represent the distance covered by train A. So here without much calculation we can conclude train A cover more distance than train B if it is a speed velocity time graph. Now here we read this paragraph first. क्या लिखा है पूरा? The figure drawn below gives the velocity graph of two vehicles A and B. Straight line OKP represent the velocity of vehicle A. ठीक है, जो ये है ये velocity of vehicle A है at any instant, whereas horizontal line, straight line CKD represent the velocity graph of train vehicle V. In this figure, D is the point where perpendicular from P meet one horizontal line CKD such that PD is equal to half LD. ये कहना चाह रहे हैं ये जो PD है ना ये half LD है. This is half. मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर है, it is 2 सेंटीमीटर. PD is half of LD. PD जो है LD का half है. अब पूछ क्या रहा है? What is the ratio between the distance covered by vehicle A and B in the time travel OL? इतने समय में what is the ratio of the
डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल ए इज टू व्हीकल बी, ठीक है। नहीं 1:2 पता नहीं है कि नहीं है, वी हैव टू चेक। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल ए? आई टेल यू, दिस area of this triangle. And what is the distance traveled by vehicle B? This area under this graph. Okay, so we have to find area of right angle triangle, we have to find area of rectangle. How we will find? See here, distance traveled by vehicle A, I take it x, I take it 1 centimeter, it is 2 centimeter. First focus on triangle. This is perpendicular, this is base, this is hypotenuse. What is the area of triangle? Half into perpendicular into base. So it will be half into 3 into x. So you can say 3/2x means 1.5x is the area of this triangle. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस. बेस को मैंने x मान लिया, परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 1 और 2, तो मैंने 1 और 2 सेंटीमीटर मान लिया. सो इट इज 3 सेंटीमीटर, 1/2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो 3/2 होता है 1.5x. नाउ पैरेलली वी कैलकुलेट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल बी. सो व्हाट इज व्हीकल बी? व्हीकल बी इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. Where it is x, it is 2. What is area of rectangle? Perpendicular into base. इसका एरिया होता है perpendicular into base. What is perpendicular to? What is base? x. It is 2x. x से x कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो 1.5 is to 2. How to simplify? Multiply with 2 on both sides, it will become 3:4. So what is your answer? 3:4. ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया का रेशियो है 3:4. वही निकालना है. द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज टू रेक्टेंगल टेल यू द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल ए इज टू व्हीकल बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. A car travel from place X to place Y at an average speed of v km per hour, from Y to X at an average speed of 2v km per hour, again X to Y at an average speed of 3v km per hour, again from Y to X at an average speed of 4v km per hour. Then the average speed of the car for the entire journey is less than v km per hour, lies between v and 2v km per hour, lies between 2v and 3v km per hour, lies between 3v and 4v km per hour. Tell me what to do. Last year in one of the batch one student told skip. वो तो आपका ऑप्शन है. If you feel any question in exam is going to be difficult or lengthy, that you can take a call to skip. But I tell you how to manage this question. मैं बताता हूं कैसे मैनेज करना. पहले क्वेश्चन समझ. क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन एक्स, ए कार ट्रेवल फ्रॉम ए प्लेस एक्स टू वाई. दिस इज ए प्लेस एक्स, दिस इज ए प्लेस वाई. दिस कार गोज विद ए स्पीड ऑफ वी, कम बैक विद ए स्पीड ऑफ 2v, देन गो विद ए स्पीड ऑफ 3v, देन कम बैक विद द स्पीड ऑफ 4. मतलब इसको कोई काम नहीं है. v स्पीड से जा रहा है, 2v से वापस आ रहा है, फिर 3v से जा रहा है, फिर 4v से वापस आ रहा है. आवर शॉर्टकट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 2 स्पीड. अपना जो शॉर्टकट था वो 2 स्पीड पे ही काम करता है, 2xy अपॉन x प्लस y. बट हियर 4 स्पीड्स आर मेंशन. ठीक है. Some student they suggested, sir, we can find average of these two, then we find average of these two, then we find average of those two value. Yes, workable, you can use it, but I feel it is more time consuming. उसमें ज़्यादा time लग जाए. Now here, what is average speed?
एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये कभी भी मत भूलना, एवरेज स्पीड इन एनी ऑफ द क्वेश्चन इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई एज्यूम वी को मैं मान लेता हूं, आई एज्यूम वी एज 1 किलोमीटर पर आवर, तो आई गो विद द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, I come back with a speed of 2 kilometer per hour, then I go with a speed of 3 kilometer per hour, then I come back with a speed of 4 kilometer per hour. मैं एक की स्पीड से जा रहा हूं, दो की से आ रहा हूं, तीन से जा रहा हूं, चार से आ रहा हूं। And I told you in the class, if the total distance given wonderful, नहीं तो हम घर से लेके चलेंगे। We assume total distance. And I tell you in my theme based lecture, I tell you in detail, if we are looking for a number which you have to divide by 1, which you have to divide by 2, which you have to divide by 3, which you have to divide by 4, better take LCM। अगर कोई नंबर को 3-4 अलग नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा तो उनका मल्टीपल ही ले लो, क्योंकि डिवीजन में फिर डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं आएगा। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 2, 3, 4? 12। तो वी एज्यूम लेट टोटल डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर। हमने टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर मान। सो आई टेक टाइम t1, t2, t3, t4, 4 बार कर रहा हूं ना मैं, तो पहले मुझे टाइम t1 लग रहा है, फिर t2, फिर t3, t4। If I cover 12 kilometer at a speed of 1, then how much time I need? 12 hour? 12 by 1. If I cover 12 kilometer at a speed of 2, then 12 divided by 2, 6 hour. If I cover 12 kilometer at a speed of 3, I need 4 hour. If I cover 12 kilometer at a speed of 4, I need 3 hour. तो मुझे टोटल टाइम कितना लगेगा देख लो, 12 plus 6 plus 4 plus 3, 12 plus 6, 18, 22, 25 hour। मुझे ये पूरा ड्रामा करने में 25 घंटे लगेंगे, जाना आना जाना आना। टेल मी व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड? 12 तो एक बार हुई है सर, 4 चक्कर काट लिया आपने। 48 kilometer. You go 12 kilometer, you come back 12 kilometer, then you again go 12 kilometer, you come back 12 kilometer. Total distance covered 48 kilometer. Time unit 25 hour. So here your average speed is coming less than 2 kilometer per hour, or it is coming 1 point something. So it means your average speed lie between 1 and 2. And what is V? V is 1 kilometer per hour. What is 2B? 2 kilometer per hour. So in this question, our average speed will lie between B and 2B. आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी V से ज्यादा आएगी, 2V से कम आएगी। This is the best method for this question. There is one more best option. Skip the way. वो आपकी कॉल है, बट ये बेटर है कि आपने स्पीड मान ली और डिस्टेंस मान ली, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड लाइज बिटवीन B एंड 2। जो एवरेज स्पीड है वो V और 2B के बीच में आए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10। ए पर्सन X from a place A to another person Y from a place B set out at the same time to walk towards each other. The places are separated by a distance of 15 km. X walk with a uniform speed of 1.5 km per hour and Y walk with a uniform speed of 1 km per hour in first hour, 1.25 km in second hour, 1.5 km in third hour and so on. मतलब एग्जामिनर थक गया, 1, 1.2, 1.5, 1.75, 2 एंड सो, ऐसा मतलब इसी सीक्वेंस में वो अपनी स्पीड बढ़ाता जाए। Which of the following is are correct? There are two statements given and we have to check out of these two statements which is correct. First you understand the question.
there are two places which are 15 kilometer apart, and there are two person X and Y. This is X, this is Y. This X walked with a uniform speed towards Y 1.5 kilometer per hour, and Y in 1 hour 1, next hour 1.25, then next hour 1.5, then 1.75, and so on. Now we check statement number 1, they take 5 hours to meet. Let us check. In 5 hours, what is the distance covered by X? 1.5 into 5, 7.5 kilometers. So X will reach midway. In 5 hours, what is the distance covered by Y? 1 plus 1.25 plus 1.5, 1.75 plus 2. If you add, it is also coming 7.5. So half distance covered by X, half distance covered by Y. So they will meet after 5 hours. Perfect. Statement number 1 is correct. Are you getting the question? X is going towards Y with a uniform speed of 1.5. Y is coming towards X with a pattern 1, first hour 1, next hour 1.25 किलोमीटर पर आवर, then 1.5 and so on. तो 5 घंटे की डिस्टेंस देख लें, उसका टोटल 7.5 आएगा, क्योंकि एपी बन रही है, एपी में 5 टर्म है, तो एवरेज क्या हो जाएगी? मिडल टर्म मल्टीप्लाई विद 5. अगर आप एपी यूज कर सकते हैं तुरंत पता चल जाएगा टोटल 7.5 है, या ऐड कर लो 1 plus 2 3, 1.75 plus 1.25 3, 3 plus 3 6, 6 plus 1.5 7.5. Statement number 1 correct. Statement number 2, they meet midway between A and B. Yes, बिल्कुल exact midway they are meeting. So second statement is also correct. So in this question number 10, both statement are correct. Answer C. अच्छा, कोई आंसर मार्क कर रहा है? बता देना मेरे को लास्ट में. C. Question number 11. I think, I don't know what is your idea about other questions. 11 I feel कि थोड़ा 11 difficult side है. Okay, but we will handle it. जब हमने V2B 3B 4B हैंडल कर लिया, ये भी हो जाएगा. A man started from his home at 2:30 hour and drove to village. वो अपने घर से 2:30 पे चला एक गांव की तरफ. Arriving there when the village clock indicate 3:15. It doesn't mean it is the correct time. वो कह रहा है कि village clock में 3:15 थी. After staying for 25 minutes, 25 मिनट वहां रुका. He drove back by a different route of length 1.25 times the first route. उसने एक अलग रूट लिया जिसकी लेंथ 1.25 टाइम्स थी as compared to the earlier route. At a rate twice as fast. वो रूट बड़ा तो था लेकिन स्पीड डबल थी. At a rate twice, डबल स्पीड से वो वहां से निकला. As fast reaching home at 4 o'clock. अपने घर वो 4 बजे पहुंच गया. As compared to the clock at home, the village clock is, जो घर की क्लॉक थी उसके मुकाबले विलेज क्लॉक जो 10 मिनट स्लो थी, 10 मिनट स्लो थी, 10 मिनट फास्ट थी, 5 मिनट फास्ट थी. Here they have clubbed two things, time, speed, distance and clock concept. But mainly 99% here is time, speed, distance will help. Clock, okay, I tell you what to do in this question. Try to understand. See, we assume his house or home clock is correct. उसके घर की clock सही है. तो he start from his home at 2:30. Cover a distance D at a speed x. Distance D is speed x. He reached this point where he wait for 25 minutes. उसने गांव में 25 मिनट, गांव की क्लॉक के हिसाब से 25 मिनट रुका हो या खुद की क्लॉक के हिसाब से रुका हो, वो 25 मिनट गांव में रुका.
he stayed for 25 minutes in the village. Then he had taken another route, which is 1.25d. It is 1.25 times as compared to the earlier route. But his speed is 2x. His speed is 2x. And he reached his home back at 4 o'clock. वो 4 बजे एग्जैक्ट अपने घर पहुंच गए. Okay. Now here we have to see the village clock as compared to is your home clock is fast, slow, and so on. Fine. हाँ, लास्ट में पता चल रहा है ना, आंसर ऑप्शन पढ़ने तक तो पता चल रहा है ना. बस एग्जामिनर की वही ड्यूटी है, पेपर के टाइम तक पता चलना चाहिए कि क्या पूछा है. ऐसा ना हो कि पेपर देने के बाद पता चले कि क्या पूछा है. 2 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाए ना कि क्या पूछा है, एग्जामिनर का काम सही है. यू कांट ब्लेम द एग्जामिनर. पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि पूछ क्या रहा है, दैट इज रियली गुड क्वेश्चन. मतलब एक अच्छा क्वेश्चन है वो, कि पूरा पढ़ा फिर पता चल रहा है कि पूछ रहा है कि विलेज क्लॉक कितनी मिनट फास्ट या स्लो है. ठीक है. नाउ हियर कैन यू टेल मी हिज ट्रेवलिंग टाइम. 2:30 to 4 o'clock टोटल टाइम इज 90 मिनट, बट 90 मिनट में से 25 मिनट इज द रेस्ट टाइम. तो कैन वी से हिज ट्रेवलिंग टाइम एंड रेस्ट टाइम इज टोटल 90 मिनट, क्योंकि वो 90 मिनट में वापस आ गया. But out of 90 minutes, 25 minutes is the rest time. So traveling time here is 65 minutes. उसको ट्रेवल करने में सिर्फ 65 मिनट मिले. Okay. So here he take time t1 here, he take time t2 here. He cover a distance d with a speed of x. He cover a distance 1.25d with a speed of 2x. He take total time 65 minutes. Okay. Here we have problem. There are 2 variable, 1 equation. So what we will do, we play with this time 65 minutes. इसके साथ हम थोड़ी छेड़खानी करेंगे. कैसे? I tell you, this 65 minutes, you just assume if we cover from the same route with a double speed, he take half time. मतलब same route से double speed से आता है, if your speed is double, you will take half time. But here distance is more. So we break 65 in such a way, just I don't know how to explain that thing, कि अगर ये 60 मिनट लेता तो it means he would have taken 40 minutes to reach this place. ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम होती, एंड ही वुड हैव टेकन 20 मिनट टू कम बैक. 40 मिनट जाने में लगते, आधा टाइम वापिस आने में लगता अगर डबल स्पीड होती. सो हियर वी कैन डू जस्ट हीट एंड ट्रायल. मैं कह सकता हूं कि इसको एक हीट एंड ट्रायल ले रहा हूं कि उसको जाने में कितना टाइम लग रहा है, वापिस आने में कितना टाइम लग रहा है. तो यू कैन एज्यूम 30 मिनट, 35 मिनट, यू कैन एज्यूम 40 मिनट, 25 मिनट. ठीक है. Now here this 40 and 25 will fit. Why? See here, if I need 40 minutes here, if the distance is same, I need 20 minutes, but I'm taking 5 minutes extra as compared to 20 minutes because I'm covering 25% distance extra. तो मुझे 25% extra time लगेगा. I need 25% extra time. So here actually this person is taking 40 minutes to reach this point and taking 25 minutes to come back. उसको 40 मिनट जाने में लग रहे हैं, 25 मिनट वापिस आने में लग रहे हैं. ठीक है.
So here at 2:30 he start from his house. It means exactly 3 o'clock 10 minute he will reach that village. वो 3:10 पे विलेज पहुंचेगा. बट अकॉर्डिंग टू द विलेज क्लॉक द टाइम इज 3 hours 15 minutes. Actual time is 3 hours 10 minutes, but the village clock is showing 3 hours 15 minutes. तो it means village clock is 5 minutes slow. Village clock जो है वो 5 minutes slow है. Just wait. चंदन को भेजना एक बार. Let me check if I can have any other explanation for this. It time speed. Okay. Or we can try one thing. Let us try one more thing. We have to find the ratio in the time. Time का ratio देखते हैं. Distance d, speed x. ठीक है. If I need time here, for example t. मुझे यहाँ पे टाइम लग रहा है t. If I keep it is d and I make it 2x, speed is double. So time will be t by 2, half. Speed double, time half. If distance is constant, मैंने रिलेशन बताया था ना, speed is inversely proportional to time. If distance is constant, speed is double. ठीक है. तो अब क्या करते हैं, इसका एक चार्ट बनाते हैं. We will make a chart. जाना आना. ठीक है. This is up down. इस डिस्टेंस को बोलते हैं अप, ये बोलते हैं डाउन. ट्रेन की जर्नी को अप डाउन बोलते हैं ना, अप डाउन, अप डाउन. If I assume distance is d, I assume speed x 2x. ठीक है. If speed will be double, time will be half. I take here time required t and here time will require t by 2. But now here if I change the distance, अगर मैं distance को change कर लूँ d की बजाय I take 1.25 d, so that will have an impact on time also. I thought like maybe in our explanation there would be better. ये तो मेरे वाले से भी बेकार है. Let me try. D distance, speed x plus 1.25 d upon 2x, ठीक है, is 65 minutes. We convert 65 minutes into hour. 65 minutes divided by 60. It means 13 by 12 hour. I repeat. मैं बताता हूँ. Total time taken 90 minutes. Out of 90 minutes, 25 minutes is the rest time. Traveling time is 65 minutes. I cover a distance d with a speed of x. I cover a distance of 1.25 d at a speed of 2x. Okay. So here this is 65 minutes. If you have to convert minute in hour, you have to divide it by 60, divided by 5, it is 13 by 12.
Now what you do, you take 2x, so it is 2d plus 1.25d is equal to 13/12. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 3.25d अपॉन 2x is equal to 13/12. कैन यू फाइंड व्हाट इज d by x? उसको उल्टा कर दो तो वही निकालना है, व्हाट इज d by x. ठीक है, व्हाट इज d by x is 13/12 इंटू 2 अपॉन 3.25. इससे यहाँ 6 आ जाएगा, 13 6 325 100 डिवाइड बाई 25 4 13 से 13 कट गया 4/6r. व्हाट इज 4/6r? 40 मिनट. आई रिपीट नाउ. Here this is house, this is village. You cover a distance d with a speed of x. You reach that village. Then you rest for 25 minutes. आप क्या कर रहे हो? 25 मिनट रेस्ट कर रहे हो. Then you come back from a different route, which is 1.25d in a distance, but your speed will be double here, 2x. And you reach this place at 4 o'clock. You start at 2:30 according to your home clock. अपनी घर की क्लॉक के हिसाब से आप 2:30 जा रहे हो और 4 बजे पहुंच. So here step number 1, how much total time you have taken? 90 minutes, 1.5 hour. But out of 90 minutes, 25 minutes is your rest time. So it means 65 minutes is your traveling time. You take time T1, T2. जाते हुए टाइम लगा T1 and you come back, you take time T2. So you write T1 plus T2 is 65 minutes, better convert in hour, which is 13/12. What is T1? You cover a distance d with a speed of x. What is T2? You cover a distance of 1.25d with a speed of 2x, 13/12. ठीक है, क्योंकि हमें d और x नहीं निकालना, हमें d अपॉन x निकालना है, विच इज इजी. d बाई x निकाला जा सकता है. कैसे निकालेंगे देखो, यू सॉल्व दिस 2x तो मल्टीप्लाइड विथ 2d और ये एज इट इज क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बराबर है 1.25d is equal to 13/12. If any doubt in this, ask. Is this okay? T1 plus T2 is 65 minutes. We convert in hour. So what is T1? You cover a distance d with a speed of x. You cover a distance 1.25d with a speed of 2x. Clear? अब ये ऐड कर लो 3.25d अपॉन 2x is equal to 13/12. ये 2 यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो 6. 3.25 को उधर ले जाओ. What is d by x? I don't need d, I don't need x, I need d by x. मुझे d by x ही चाहिए और वो आ जाएगा. कैसे आएगा? 13/6 3.25. बट दिस इज ना r, हम r लेके चल रहे हैं, आपका आंसर r में आएगा. या 65 मिनट लेके चलोगे तो मिनट में आएगा. सो नाउ हियर नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व इट. सो हियर इट इज 13/6 325 100 ऊपर चला जाएगा. 25 4 जा 100, 25 इंटू 13 इज 325. 13 से 13 कैंसल, 4/6 आर मल्टीप्लाई विथ 60 40 मिनट. व्हाट इज दिस? d by x. एंड व्हाट इज d by x? जाने का टाइम. You go to that place, d by x is 40 minutes. So it means you take 40 minutes to reach from this place to this village. आपको 40 मिनट जाने में लगता है और वही हमें चाहिए था. You start from your home at 2:30 and you need exactly 40 minutes to reach the village. So 2:30 plus 40 minutes means at 3 o'clock 10 minutes we reach the village. But at that time you check the village clock showing 3 or 15 minutes. So question is that village clock is slow or fast? It is slow by 5 minutes. आपकी village clock slow है 5 मिनट से, या fast है? Fast होगी, sorry, fast. Village clock is fast by 5 minutes. Answer is D. Fast. Online student, fast. It is fast by 5 minutes.
5 मिनट फास्ट, डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, two friend X and Y start running and they run together for 50 meter in same direction and reach a point. X turn right, run 60 meter, while Y turn left and run 40 meter. Then X turn left and run 50 meter and stop. Y turn right and run 50 meter, stop. How far are the two friends from each other now? ये वैसे होना चाहिए डिस्टेंस का, उसका डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन ना, but here how far they ask, we can handle it. Two friend X and Y start running and they run together for 50 meter in the same direction, reach a point X. Two friend X and Y start running, they run together for 50 meter in a same direction. अब वो same direction कोई भी ले लो, मान लो यहाँ पे वो 50 मीटर भागे, and from this point X turn right, X right turn किया 60 मीटर, Y turn left 40 मीटर, X turn left, ये X आया, X turn left run 50 मीटर, ये X है, यहाँ पे X को व्हाइट कलर ले लो, X यहाँ से राइट आया 60 मीटर, X लेफ्ट गया 50 मीटर एंड स्टॉप, X यहाँ के स्टॉप हो गया, Y हियर लेफ्ट 40 मीटर, X टर्न लेफ्ट रन 50 मीटर, Y टर्न राइट, यहां से Y राइट गया 50 मीटर यहाँ पे. So what is the distance between those two person? Yes, 60, 40, 50, 50. So it is 100 meter. I think same question we have discussed in direction sense also. Next is we will do two question quickly on race. Okay. In a 500 meter race, B start 45 meter ahead of A, but A win the race, while B is still 35 meter behind. What is the ratio of the speed of A and B? Assume that both start at the same time. In a race question, time is constant. They start at same time, they stop at same time. So here, when the time is constant, tell me if time is constant, what is the relationship between distance and speed? Distance is equal to speed into time. If time is constant, distance is directly proportional to speed. Distance दी है, speed का ratio निकालना है. Here in a 500 meter race, B start 45 meter ahead of A. B जो क्या कर रहा है, A से 45 मीटर आगे स्टार्ट हो रहा है, 45 मीटर ahead of A. And but A win the race, फिर भी A जीत जाता है, and B is still 35 meter behind. This is B who is 35 meter behind. So tell me what is the distance covered by A? 500 meter. And what is the distance covered by B? 45 meter ये चला गया, 35 meter ये चला गया, 80 meter. So what is the distance covered by B? Only 420 meter. B cover 80 meter less. 45 meter आगे खड़ा था, 35 meter अभी भी पीछे है. B is 45 meter ahead and B is still 35 meter behind. So 45 plus 35, 80 meter less than A. So 500 minus 80, 420. Simplify. 0 से 0 कट गया. Divide by 2, divide by 2, 25 is to 21. So your answer is 25 is to 21 is the ratio of their speed. Next question. Question number 14. X, Y, Z are three contestants in a race of 1000 meter. Assume that all run with different uniform speed. X give Y a start of 40 meter. X give Z a start of 64 meter. If Y and Z were to compete in a race of 1000 meter, how many start will Y give to Z? Similar type of question I have discussed in the class. So here X give Y a start of 40 meter, means X has to cover 1000 meter, Y has to cover 960 meter only, 40 meter कम. Y उससे 40 मीटर आगे खड़ा हो. And X give Z a start of 64 meter, इससे 64 मीटर आगे है, तो it is Z. तो here it is 24 meter. Here at what point Z is standing? 936 meter. If there is a race of 1000 meter between Y and Z, then Y will give Z a start of.
24 is the wrong answer. 24 meter when there is a race of 960 meter. So what you do, अब x को भूल जाओ, y पे ध्यान दो. If y cover 960 meter, then x get a start of 24 meter. y और z के बीच में डिस्टेंस 24 मीटर है, but y is not covering 1000 meter, y is covering only 960 meter. If y has to cover 1 meter, then x will get a start of 24 upon 960. If y has to compete for a 1000 meter race with z, then z will get a start of how many meter? 24 upon 960 into 1000. Here it is 40, this is coming 25 meter. meter. So correct answer for this question is 25 meter. Done. Next is circular motion. Question number 15. A and B walk around a circular path. They start at 8 a.m. from the same point in opposite direction. A and B walk at a speed of 2 rounds per hour, 3 rounds per hour respectively. How many times shall they cross each other after 8 a.m. and before 9:30 a.m.? I can tell you just one shortcut. In a circular motion, if there are two persons A and B, they are running in opposite direction. If A complete 2 rounds in 1 hour, B complete 3 rounds in 1 hour, how many times they will cross each other? We add 2 plus 3, 5 times. If it is opposite direction. When it is same direction, we subtract. Same direction होता है तो हम subtract करते हैं, opposite direction में हम add करते हैं. So the idea here is A complete 2 round per hour. A हर 30 मिनट में स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा, मतलब 2 राउंड इन 1 आवर. बी कंप्लीट 3 राउंड इन 1 आवर. तो हाउ मेनी टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इन 1 आवर? यू हैव टू ऐड 5 टाइम्स. सो फ्रॉम 8 to 9 दे विल क्रॉस ईच अदर 5 टाइम्स. इफ इन 1 आवर दे क्रॉस 5 टाइम, कैन वी से एवरी 12 मिनट दे क्रॉस ईच अदर? अगर वो 60 मिनट में 5 बार क्रॉस कर रहे हैं, हर 12 मिनट में क्रॉस करेंगे. फ्रॉम 9 to 9:30 they will cross each other at 9:12 and 9:24. 2 बार और अपने आप को क्रॉस करेंगे, तो it is 7 times is your answer. Question number 15, answer is a 7 times. You just remember this shortcut. In a circular motion, if there are two person running in the same direction, अगर इसकी जगह ये होता A and B, A complete 2 round in 1 hour, B complete 3 round in 1 hour, and in 1 hour how many time they will cross each other? 3 minus 2 1. तब हम करते हैं subtract. अगर ये दिया हुआ कि they are running in opposite direction, A complete 2 round, B complete 3 round, so how many time they will cross each other? You have to add 2 plus 3, 5 times. This is the concept. Next is question number 16. Two person A and B are running on a circular track. At the start, B is ahead of A and their position make an angle of 30 degree at the center. When A reaches the point diametrically opposite to his starting point, he meets B. What is the speed of A and B if they are running with uniform speed? Two person A and B are running on a circular track. At the start, B is ahead of A. A starting point पे, B is ahead of A. And B is ahead of A such that they make a angle of 30 degree है. वो एक 30 डिग्री एंगल बनाते हैं. A के लिए व्हाइट कलर यूज कर लो. This is A and this is B. B is ahead of A. B A से आगे और 30 डिग्री का एंगल बना. Is this clear? Now here, when A reaches the point diametrically opposite, जब A दौड़ के यहां पहुंचेगा, उतनी देर में B यहां पहुंचेगा. We will reach this point and A will meet the B here. Time is constant.
they start at same time, they meet at same time. Time is constant. When time is constant, what is the ratio in distance and speed? Directly, distance is equal to speed into time. Time constant, distance is directly proportional to speed. There is a distance in meter, there is a distance in degree also, जो हमने clock में भी पढ़ा था. What is the distance covered by A? 180 degree. A ने तो पूरा 180 डिग्री ट्रेवल किया. What is the distance covered by B? 150 डिग्री. B ने 30 डिग्री कम कवर किया है, 150 डिग्री. What is the ratio? Distance ratio is the speed ratio. डिग्री से डिग्री कैंसिल, डिवाइड बाय 30, 6:5. So what is their speed ratio? 6:5. Fine. Next question. X and Y run a 3 kilometer race along a circular course of length 300 meter. Their speed are in the ratio of 3:2. If they start together in the same direction, how many times would the first one pass the other? The start off is not counted as passing. ठीक है? I tell you what is this question. See here, the course, circular course length 300 मीटर, इसकी लेंथ 300 मीटर है, बट दे हैव ए रेस ऑफ 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर की रेस है, 10-10 राउंड लगाने. They have to put 10-10 round. Their speed are in the ratio of 3:2. X and Y. Their speed is 3:2. X की स्पीड 3 ले ली, Y की स्पीड 2 ले ली. They start together in the same direction. They start together in the same direction. This is not mentioned they complete 3 round in 1 hour. अगर ये लिखा होता 3 round in 1 hour, 2 round in 1 hour, it means in 1 hour they will cross each other once. 3 minus 2, 1 हो जाता. If it is mentioned A complete 3 round in 1 hour, B complete 2 round in 1 hour, you can directly conclude that X and Y, they will cross each other only one time in 1 hour, 3 minus 2. बट ये बोल रहा है कि देयर स्पीड रेशियो इज 3:2 एंड दिस कोर्स इज ऑफ 300 मीटर एंड देयर इज ए रेस ऑफ 3 किलोमीटर. तो 3 किलोमीटर जो पहले पहुंच जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा. हु विल रीच 3 किलोमीटर फर्स्ट? एक्स, क्योंकि एक्स की स्पीड ज्यादा है. ठीक है. सो हियर हाउ मेनी टाइम दे क्रॉस ईच अदर, दिस इज द क्वेश्चन. आंसर ऑप्शन गिवन 2, 3, 4, 5. आंसर ऑप्शन सजेस्ट इवन वी कैन ट्राई मैनुअली ऑल्सो. नाउ हियर tell me one thing, when X cover 300 meter, how much distance Y will cover? 200 meter. जितनी देर में X 300 मीटर कवर करेगा, Y 200 मीटर कवर करेगा. X completed 1 round. X ने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, Y अभी पीछे 200 मीटर. Then X start covering second round. ठीक है. X cover 300 more meter means X cover total 600 meter, Y will cover only 400 meter. Y एक पूरा राउंड कंप्लीट करके यहां पहुंचेगा, यहां पे, यहां तक पहुंचेगा. Tell me when X cover 900 meter, how much distance Y cover? 600 meter. And what is this starting point? जितनी देर में X 3 राउंड लगाएगा, Y 2 राउंड लगाएगा. तो when X complete 3 round, that time X will catch Y for the first time. 3 राउंड में वो Y को एक बार पकड़ेगा. X complete 3 round, Y complete only 2 round and they will meet at starting point. So here at 900 meter mark, X will catch Y at the starting point. से Y से मिलेगा, हाँ भाई क्या चल रहा है? बोले अभी तो मेरे 2 ही राउंड कंप्लीट हुए. X कहेगा मेरे 3 हो चुके. तो here next 3 more round, X will cover 1800 and Y will cover only 1200. मतलब here every 3 round X take every 3 round, Y cover only 2 round. ठीक है. तो 900 मीटर, 1800 मीटर, 2700 मीटर. So here 3 time X will cross Y.
300, 200, 600, 400. हाँ हाँ. So answer is 3 times. I repeat, when X complete 3 round, Y is able to complete only 2 round. So that time they meet for the first time. X cross Y. When X complete 6 round, Y complete 4 round, that is the second time. When X complete 9 round, Y able to complete only 6 round, this is the third time. फिर X आगे निकल गया, एक राउंड कंप्लीट कर दिया, Y अभी पीछे है. Okay, so here answer is 3 times. Next is boat and stream. Only one question has been asked in 2020. A man take half time in rowing a certain distance downstream, then upstream. Then what is the ratio of the speed in still water to the speed of the current? Okay. Now here a man take half time in rowing to a certain distance downstream, then upstream. Here this is speed downstream and this is speed upstream. Here this is the time t1, here it is the time t2. Here this time is half. I assume this time is 1 hour, so this time will be 2 hours. Time ratio is t1 is to t2 is 1 is to 2 and distance is same. When the distance is same, what is the ratio of speed and time? Ulta. Speed and time is inversely proportional. Distance is constant. So here speed downstream is to speed upstream will be 2 is to 1. Speed downstream, speed upstream. यहाँ पे अगर half time लग रहा है तो speed double होगी. सीधा logic है ना. Here he is taking half time here, so speed has to be double. So downstream is double as compared to upstream. What is downstream? Speed of the boat plus speed of the current. तो here speed of the boat is x, speed of the current is y, ठीक है, upon x minus y is 2 by 1. कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x plus y is equal to 2x minus 2y. Take x one side, y another side. You take x there, y here. 3y is equal to x. Take y here. What is x upon y? 3 by 1. What is the ratio of the speed of the boat is to speed of the current? 3 is to 1. 3 is to 1. चेक भी कर लो. अगर स्पीड ऑफ द बोट 3 है, स्पीड ऑफ द करंट 1 है, डाउनस्ट्रीम बन जाएगी 4, अपस्ट्रीम बन जाएगी 2. देयर रेशियो विल बी 2 is to. आई रिपीट, here in downstream you are taking half time. If in downstream you are taking half time, तो downstream has to be double. तो downstream speed is double as compared to upstream. Downstream क्या होती है? Speed of the boat plus speed of the stream. And upstream is speed of the boat minus speed of the stream. वही मैंने यूज किया. I find what is the ratio of x and y. X and y ratio coming 3 is to 1. Okay. Now quickly we will do profit and loss. 8 क्वेश्चन है, 8 मिनट लगेंगे. If Sohan, while selling 2 goat at the same price, make profit of 10% on one goat and suffer a loss of 10% on other. I told you if selling price of 2 article is same, on one 10% profit, other 10% loss. What is overall profit and loss? 1% loss. Minus x square upon 100% minus 10 square upon 100% minus 100 upon 100 minus 1%. So 1% loss. Question number 2. Monthly income of Peter and Paul are in the ratio of 4 is to 3. Their expenses are in the ratio of 3 is to 2. Each save 6,000 at the end of the month. Their monthly income respectively are. उनकी monthly income निकालनी है. So you can take monthly income is 4x, 3x. Income minus saving is expenditure. तो income में से saving घटा दो. तो that will be equal to expenditure. What is expenditure ratio? 3 is to 2. तो 3 by 2. 4x is the income of Peter. पार्टनरशिप वाले हैंडआउट में सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने. 4x is the income of Peter. 3x is the income of Paul.
इनकम माइनस सेविंग इज एक्सपेंडिचर, इनकम में से सेविंग हटा दो वो एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर से इक्वेट कर दिया, यू कैन सो 2 4x माइनस 6000 इजकल टू 3x माइनस 6000, तो इट इज 8x माइनस 12000 इजकल टू 9x माइनस 18000. Take 8x this side, 9x minus 8x is x, 18,000 this side, 6,000. x की वैल्यू आ जाएगी 6,000. What is their monthly income? 24,000 and 18,000. Your answer option A is perfect. या आंसर ऑप्शन यूज कर लेते, बताता हूं आंसर ऑप्शन कैसे यूज होगा. आंसर ऑप्शन ए, 24,000 and 18,000 is their monthly income. If their saving is 6,000, तो व्हाट इज देयर एक्सपेंडिचर? 18,000 ऑफ पीटर, और पोल का क्या हो जाएगा? 18,000 माइनस 6,000 12,000. एंड व्हाट इज देयर रेशियो? 3:2. इट इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. आंसर ऑप्शन ए यूज कर लो, उसमें से सेविंग हटा दो, एक्सपेंडिचर आ जाएगा 18,000 12,000. व्हाट इज द रेशियो ऑफ 18,000 12,000? 3:2. एंड द सेम इज मेंशन इन द क्वेश्चन. इट विल फिट इन योर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. A person allow 10% discount for cash payment from the market price of a toy. Still make a 10% profit. What is the cost price of the toy? What is marked rupees 770? अगर एक टॉय के ऊपर मार्क प्राइस 770 है, what is the cost price of the toy? See here, the price mark is 770 and I give 10% discount. डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस, तो मैंने 77 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया. 693 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस, विच इंक्लूड 10% प्रॉफिट. इसमें 10% प्रॉफिट भी है. यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस. यूज आंसर ऑप्शन. इफ कॉस्ट प्राइस इज 610, माई प्रॉफिट इज 10%. व्हाट इज 10% ऑफ 610? 61. So selling price has to be 671. It is wrong, because according to the calculation selling price has to be 693. 620. If the cost price of the toy is 620, how much profit I need? 62 rupees. So it has to be 682. Wrong. What is the actual cost price of the toy? 630. How much profit I need? 10%. मुझे 63 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, 693 में बेचना है. कस्टमर हैप्पी, आई एम हैप्पी. Even after giving a 10% discount, I make a 10% profit. What is the cost price of the toy if mark price is 770? तो स्टेप नंबर 1 770 में से डिस्काउंट हटा दो, सेलिंग प्राइस 690 आ रहा है. यू हैव टू फाइंड कॉस्ट प्राइस विच विल बी टाइम कंज्यूमिंग. यूज आंसर ऑप्शन. याद है वो डस्टर का मैंने सेलिंग प्राइस बताया था, कॉस्ट प्राइस पूछा था, और आप में से काफी लोगों ने 80 आंसर दिया था. आंसर निकला था 83.33. Because point is this 10% profit is calculated on cost price, not on selling price. इसके अंदर 10% include है. It include your investment and profit. It include both. इसके अंदर दोनों चीजें included है. तो use answer option. Answer options are available that can be used. Now next. Question number 4. Gopal bought a cell phone and sold it to Ram at 10% profit. Then Ram wanted to sell it back to Gopal at 10% loss. राम का मन किया कि मैं 10% लॉस पे गोपाल को बेच दूं. What will be the Gopal position if he agreed? ठीक है, कॉस्ट प्राइस गोपाल के लिए मान लो 100 रुपए का. ठीक है, उसने एक 100 रुपए का मोबाइल खरीदा. ही चार्ज 10% प्रॉफिट. उसने 10 रुपए प्रॉफिट में राम को 110 रुपए का बेच दिया. राम वांट टू सेल इट बैक टू गोपाल एट 10% लॉस. व्हाट इज 10%? 11 रुपीज लॉस. तो ही वांट टू सेल बैक टू राम एट 99. ठीक है, व्हाट विल बी द गोपाल पोजीशन इफ ही एग्रीड? 1% प्रॉफिट. बट आई टेल यू, एक्चुअली लॉजिकली देखा जाए 10 रुपए तो यहाँ प्रॉफिट हुआ, एक यहाँ हुआ, तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट है. ये भी तो प्रॉफिट ही तो गोपाल को. बट आउट ऑफ आंसर ऑप्शन द बेस्ट आंसर ऑप्शन अवेलेबल इज 1% प्रॉफिट.
पहली चीज तो प्रॉफिट है, ठीक है, 1% तो सीधा सीधा दिख रहा है। पहला आंसर ऑप्शन नीदर लॉस नो प्रॉफिट, रॉन्ग। लॉस, राम को, गोपाल की क्या पोजीशन है, दे आर नॉट आस्किंग राम पोजीशन, दे आर आस्किंग गोपाल पोजीशन। गोपाल इज नॉट हैविंग लॉस एट ऑल। प्रॉफिट 0.5%, नो, प्रॉफिट 1%, और प्लस ये 10 रुपए भी तो उसकी जेब में गए। 100 रुपए की चीज 110 की बेच के 99 की वापिस आ गई, ठीक है। तो क्या फायदा हो गया उसको, उसको आइटम भी वापिस मिल गई और 11 रुपए भी बच गए। उसको 11 रुपए का प्रॉफिट है एक्चुअली देखा जाए तो। बट आंसर ऑप्शंस ऐसे हैं कि हमें गेन 1% ही मार्क करना पड़ेगा, वी हैव टू मार्क ओनली गेन 1%। आई सेल दिस थिंग टू यू, आई गेट इट बैक, ठीक है, एंड आई सेव 11 रुपीज। ओवरऑल ड्रामे में मेरे को 11 रुपए बच गए, तो मुझे 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। 110 रुपए की चीज बेच के वही मुझे 99 की वापस मिली। आई हैव सेव्ड 11 रुपीज इन दिस ट्रांजेक्शन एक्चुअली। मुझे ओवरऑल 11 रुपए का फायदा है। गोपाल को ओवरऑल 11 रुपए, उसकी चीज वापस आ गई और उसको ओवरऑल 11 रुपए भी मिल गए, ठीक है। तो हियर बट आंसर ऑप्शंस आर like here such that we have to mark gain 1%, हमें सिर्फ 1% ही मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट, शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल फॉर ₹40 and get X% profit. However, when he sell it at ₹20, he face same percentage of loss. मतलब वो 40 रुपए का बेचता है तो X% प्रॉफिट है, 20 रुपए का बेचता है तो X% लॉस है। What is the original cost of the article? There is a shortcut mid value. इसका सीधा शॉर्टकट है the mid value of these two selling price. See here, I tell you, if I sell this marker in 100 rupees, I make X% profit. If I sell the same marker at 50, there will be X% loss. What is the original cost price of the marker? Mid value of this two, 75. क्योंकि 75 के ऊपर 25 रुपए प्रॉफिट, 75 के ऊपर 25 रुपए लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आर कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो मिड वैल्यू इज द वैल्यू विच सजेस्ट यू हैव 25 रुपीज प्रॉफिट ऑन 75, you have 25 rupees loss on 75, you have 1/3 profit, 1/3 loss. So in this type of question, here when I sell it in 40, I make X% profit. If I sell the same article at 20, I make X% loss. See, 30 is the actual cost price of that article. क्यों? There is a 10 rupees profit, 10 upon 30, 1/3 profit, and 10 upon 30, 1/3 loss. मुझे 1/3 profit है, 1/3 ही loss है. So mid value is the answer. If this type will be asked, there is a direct answer, mid value. See, the mid value is the answer. Question number 6. A person bought a car and sold it for ₹3 lakh. If he incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy the car? कहना चाह रहा है कि मैंने एक कार खरीदी थी और उसी कार को मैंने 3 लाख में बेचा and sold it for ₹3 lakh. A person bought a car, ये अलग चीज है, उसने एक कार खरीदी and sold it for ₹3 lakh. मैंने 3 लाख रुपए में बेची. And if there is a loss of 20%, then what is the cost price of the car for me? मैंने कार कितने रुपए की खरीदी थी? One common mistake you also have done when I have taken profit and loss, you calculate 20% of 3,60,000 and many students they mark 3,60,000, but it is wrong because 20% is already included in that. मतलब वो loss क्यों? Loss is also calculated on cost price. How you can solve? X minus 20% of X is equal to 3 lakh. Cost price I assume X and there is a loss 20%. You have to deduct loss from the cost price, not from selling price. X minus 1 by 5X is equal to 3 lakh. What is X minus 1 by 5X? 4 by 5X is equal to 3 lakh. Value of X is coming 3 lakh into 5 by 4, ये आ जाएगा 3,75,000. 15 लाख को 4 से डिवाइड करोगे 3,75,000 आता है. इसका मतलब
I purchased that car in 3,75,000. Yeah, chain rule याद है? When it is a profit we add, when it is a loss we subtract. Cost price 100% minus 20% is equal to selling price. Cost price into 80% is equal to selling price. What is 80%? 4 by 5 is equal to 3 lakh. So cost price will be 3 lakh into 5 by 4. It is 15 lakh divided by 4. 15 lakh divided by 4 is 3,75,000. Or you can use answer option. आंसर ऑप्शन यूज कर लो कि कॉस्ट प्राइस 3,75,000 है, बट उसमें क्या होगा, पहले पहला ट्राई करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इसका 20%. व्हाट इज 20% ऑफ 3,75,000? 75,000. सो देन सेलिंग प्राइस शुड मैच द क्वेश्चन. 75,000 रुपए का लॉस होने के बाद 3 लाख रुपए की बेचे. एक्चुअली आई परचेज दैट कार इन 3,75,000. सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार फॉर मी इज 3,75,000. क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. जिसको क्लियर भी नहीं हो रहा ना, अभी मन कर रहा है बस हो जाए, बस क्लियर ही है सब कुछ, ठीक है, घर जाके देखा जाएगा. What percent of the water must be mixed with honey? ये 2024 के क्वेश्चन है दो. 2024 they asked 2 question from profit and loss, 1 question from partnership. अब 2024 के क्वेश्चन है तो थोड़ी एनर्जी लाओ. एनर्जी आती है अगर हनी की जगह कुछ और होता है इस क्वेश्चन में. What percent of water must be mixed with honey so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price of honey? ये सेम मिल्कमैन वाला क्वेश्चन है. ए मिल्कमैन यूज्ड टू हैव वाटर इन मिल्क and still make a profit of 20% selling the mixture at cost price of the milk. मैं cost price पे बेच रहा हूँ but still I add water. So this question is of adulteration. Here this person is doing adulteration, adding water, that's why I make profit. Okay, so here what is the profit percentage? Profit percentage is P upon CP. And profit percentage is given 20%. And what is 20% fraction value? 1 by 5. I explain in a milkman question. इस इंसान के पैसे किसके लिए? पानी के लिए, हनी के लिए? हनी के लिए, ठीक है. और प्रॉफिट क्या देगा? पानी. तो प्रॉफिट इज वाटर एंड हियर कॉस्ट प्राइस इज हनी. तो वाटर इज टू हनी रेशियो इज 1:5. So what percent of water must be mixing? 1 by 5. What is 1 by 5? 20%. 1 by 5 is the water. उसके अंदर पानी कितना? 1 by 5. और water and honey ratio is 1:5. Next question. A person buy 3 article PQR for rupees 3,330. P cost 25% more than R. And R cost 20% more than Q. What is the cost of P? वैसे परसेंटेज का क्वेश्चन है. आंसर ऑप्शंस आर गिवन. A person buy 3 article PQR for rupees 3,330. P cost rupees 25 more than R. R cost 20% more than Q. Are you able to recall in percentage? We have done type 3. P is 25% more than R. R is 20% more than Q. Don't assume P, you assume Q. Q से start करना है. But assuming 100 will not help you. क्यों? क्योंकि already there are value. So here if you want to assume, you assume it 100%. It is 20% more, so it is 120%. It is 25% more on 120. What is 25% of 120? 30. तो P की वैल्यू हो जाएगी 150%. 25% of 120. 120 के ऊपर 25% ज्यादा है. तो what is 25%? 1/4.
तो 120 का 1/4 क्या हो जाएगा 30, तो ये 150 हो जाएगा। व्हाट इज टोटल 150 प्लस 120 प्लस 100 कितना आ रहा है 370। तो हियर 370% इज इक्वल टू 3330। पी की कॉस्ट निकालें, पी की कॉस्ट कितना है 150%, तो 1% इज 3330 अपॉन 370, 150% विल बी 3330 अपॉन 370 इंटू 150। इसको कैंसिल करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 इंटू 150 इज 1350। यूनिटरी मेथड यूज कर लेना। एनी डाउट? नो। पार्टनरशिप मतलब 2024 इज ए ईयर जहां पे काफी सारे टॉपिक का खाता खुला था। Partnership, they have not asked any question in 2024. For the first time they asked question. Cutting of queue, for the first time they asked one question. Yes, you can use answer option, you can use answer options also, but यहाँ पे आंसर ऑप्शन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, ये पिछले क्वेश्चन में बोल रहे हो? पिछले क्वेश्चन में यस। हाँ, पार्टनरशिप, 2% P and Q enter into a business. P put rupees 14,000 more than Q, but P has invested for 8 months, Q has invested for 10 months. If P share is rupees 400 more than Q share out of the total profit of rupees 2,000, what is the capital contributed by P? PQ, capital time profit. P has invested for 8 months, Q has invested for 10 months. P put 14,000 rupees more than Q. So whatever Q put, P put 14,000 more plus 14,000. And इसीलिए P को ज़्यादा भी मिले 400 रुपये more than Q out of 2,000 rupees. Total profit 2,000. P get 400 rupees more than Q. Tell me how much P get as a profit share. P को कितने रुपए प्रॉफिट मिलेगा? टोटल प्रॉफिट 200 है, 2000 है। Here P gets 400 rupees more than Q. Q, P का प्रॉफिट हो गया Q प्लस 400, टोटल प्रॉफिट 2000, तो 2Q इक्वल टू 1600। Q की वैल्यू आ गई 800 रुपए, तो Q का प्रॉफिट 800, P का प्रॉफिट 1200। तो प्रॉफिट ऑफ Q इज 800, प्रॉफिट ऑफ P इज 1200. What is the ratio? What is their profit ratio? 3:2. Their profit ratio has to be in 3:2. P को 1200 रुपए मिल रहे, Q को 800 रुपए मिल रहे, तो उनका प्रॉफिट का रेशियो हो गया 3:2. So now here this is 4, this is 5, ठीक है। Here Q put X rupees, P put X plus 14,000. Multiply 4x plus 14,000, 5x. You equate with 3:2. Profit ratio 4x plus 56,000 is to 5x. It should equal to 3:2. Because according to question, their profit ratio is actually 3:2. 2000 रुपए में से 1200 रुपए P को मिल रहे हैं, 800 रुपए Q को मिल रहे हैं। Solve for x. कैसे होगा? 4x plus 56,000 divided by 5x, 3/2, cross multiply, 8x plus 1,12,000 is equal to 15x. Take 8x this side, 7x is equal to 1,12,000. Tell me what is the value of x? 1,12,000 divided by 7. x की वैल्यू बता दो, 16,000.
So here x value is 16,000. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पी ने लगाया x प्लस 14,000, तो 16,000 प्लस 14,000, so P capital is coming 30,000. P put 30,000 rupees as a capital. Fine. Thanks for your cooperation. Okay, next week we will have a doubt session. I will update you. ठीक है, on Friday I will update you. Next week we can keep a doubt session, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट और आप में से भी कुछ लोगों ने डाउट ऑन नंबर सिस्टम PYQ, DI, ज्योमेट्री मेंचुरेशन, तो आई विल कीप ए डाउट सेशन. ठीक है, अब अदरवाइज आपका वीकली मेंटर के साथ डाउट सेशन तो चल ही रहा है, बट एनीवेज आई विल आल्सो टेक नेक्स्ट वीक वन डाउट सेशन. आई विल अपडेट यू ऑन फ्राइडे, ठीक है, अबाउट दैट डाउट सेशन. ओके स्टूडेंट्स, अच्छा आंसर कौन बताएगा? इसमें फटाफट मार्क करके दे दो, ठीक है, जो जो लेना. किसमें? सब्जेक्टिव टेस्ट में एक्यूरेसी कैसे? ऑब्जेक्टिव में 60% आ रही है, बढ़ाओ उसको. मतलब अभी के लिए सही है, मतलब अगर अभी स्टार्ट करिए. हाँ अभी के लिए ठीक है. सर वो मेंटोर आज तो नहीं होंगे, मतलब कल मिल लेना. बिफोर क्लास एक बार चंदन को बोल देना अभी, ठीक है, कल फिक्स कर देंगे. ठीक है, कल तो होंगे. ठीक है, यस, ठीक है. जैसे 7/8 है, हाँ तो जैसे टोटल वर्क सपोज 8 है, तो वो 7 उसका भाग कर रहा है 21 दिन में, 8 भाग 24 दिन में होगा. एफिशिएंसी 3 हो गई उसकी. हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं. 1 पार्ट 3 डेज में हो गया, 8 पार्ट 24 दिन में हो गया. हाँ, और वो बोलता 50% बढ़ा दे रहा है, यानी 8 से 12 हो जाएगा, 12 में 36 दिन हो 36 जाएगा. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. वो वाला जो क्वेश्चन पूछा था वो है अभी, ट्रेन वाला, दिखाना एक बार, मेरे को फोटो लेनी है उसकी. टाइम एंड वर्क वन क्वेश्चन सर, विच वन अब्दुल? क्वेश्चन नंबर 1. टाइम एंड वर्क क्वेश्चन नंबर 1, आई रिपीट. लंबा खासा क्वेश्चन था. I repeat question number 1, time and work. Like here, there was food for 1,000 soldier for 1 month. We assume that 1 month 30 days, and one soldier consume 1 kg in a day. So here 1,000 soldier will consume 1,000 kg 30 days. So total food 30,000 kg.
आफ्टर 10 days, मतलब डेली दे कंज्यूम 1000 kg फॉर 10 days, तो 10,000 kg हैज बीन कंज्यूम. What is the remaining food? 30,000 minus 10,000, 20,000 is the remaining food now. 1,000 more soldier joined. So earlier 1,000 soldier, now 1,000 more has joined, 2,000 soldier. 2,000 soldier daily consuming 1 kg, so they will consume 2,000 kg. So here 20,000 divided by 2,000, answer is 10 more days. How long would the soldier be able to carry on with the remaining food? 10 more days. Answer is D. Okay. Okay, thank you students. Okay, thank you. एक स्टूडेंट वो मेंटोर से मिलने के लिए बोल रहा था, कल का बता देना. ये वाला नहीं समझ में आया. वो तो मैंने सीधा शॉर्टकट बताया ना, थीम बेस्ड लेक्चर में कर लेंगे इनको डिटेल में. मतलब इसमें कैसे कर? इसमें क्या होता है कि सर्कुलर ट्रैक में अगर दो बंदे हैं, कर A and B, if they are doing in same direction, A put 3 round in 1 hour, B put 2